Today I will discuss about human reproduction. What is reproductions? What is reproduction? It is defined as biological process in which an organism give rise to young one similar to itself What is reproduction? It is defined as the biological process in which an organism give rise to young one similar to itself. Reproduction रो अर्थ है गोटे ऑर्गेनिज्म तार आइडेंटिकल यंग वन क्रिएट करिवार प्रोसेस को कह जाए रिप्रोडक्शन. देन type of reproduction. Type of reproductions, that is sexual reproductions and asexual reproductions. Sexual reproductions occur. Sexual reproduction involve with the gametes, that is spore and ovum. Asexual reproduction not involved with gametes is called asexual reproductions. Then type of organisms. Type of organisms. Organism, three types reproduction, that is oviparous, तापरे viviparous, तापरे ovoviviparous. जो ऑर्गेनिजम्स एग को लाइन करे, एग लाइन is called oviparous. But the organisms give rise to egg बा एग लाइन करे ताको कहती oviparous. Then the organism give birth to young one is called viviparous. Ovoviviparous means both
both laying egg and give birth young ones. Oviparous, viviparous and ovoviviparous. The animal जे यूटरस रे अंडा लाइंग करे ताको एग लाइंग बा ओविपारस. द ऑर्गेनिज्म गिव बार्थ टू यंग वन इज कॉल्ड विविपारस. द ऑर्गेनिज्म बोथ लाइंग एग एंड गिव बार्थ यंग वन इज कॉल्ड ओवोविविपारस. तो ओवोविविपारस रे प्लासेंटा नथाए, प्लासेंटा नथाए. Next, process of human reproduction. Human reproduction type viviparous. Human reproduction type viviparous, that is the human give birth to young one. So the human reproduction type हेउची viviparous because that it is the human give birth to young ones. Then the process of human reproductions, that is first process होची gametogenesis. Second, insemination. Third process, fertilisation. Fourth, implantations. Fifth, gestations. Sixth, parturitions. Seventh, lactations. This is all about the process of human reproduction, that is first gametogenesis, second insemination, third fertilization, fourth implantation, fifth gestations, sixth parturitions, seventh lactations. What is gametogenesis? Gameto means formations. Gameto means formations, that is the formation of gamete is called gametogenesis. Formation of gamete is called gametogenesis. The gamete, that is spore and ovum. मेल रो गैमेट स्पर्म, फीमेल रो गैमेट ओभम. द स्पर्म एवं ओभम रो फॉर्मेशन करिवार प्रोसेस को कहती गैमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट आसिला सेकेंड रहिला इनसेमिनेशंस. इनसेमिनेशंस मीन्स द ट्रांसफॉर्म ऑफ मेल गैमेट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. The transfer of male gamete in female reproductive tract. Male gamete टाकू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रे
एंट्री करिवार प्रोसेस को कहती इनसेमिनेशंस। The insemination is the process of transformation of a male gamete in female reproductive tract is called insemination. Next asila fertilizations. What is fertilizations? Fertilizations. What is fertilizations? The fusion of male and female gametes is called fertilizations. मेल गैमेट एवं फीमेल गैमेट रो फ्यूजन प्रोसेस को आमे कहिबा फर्टिलाइजेशंस। दैट इज मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म प्लस ओभा बा ओवम रो फ्यूजन को कहती फर्टिलाइजेशंस। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होची इम्प्लांटेशंस। Implantations means the attachment of blastocyst to uterine wall. Blastocyst यूटेरस भीतर को एंट्री करिबा प्रोसेस को यूटेरस रो एंडोमेट्रियम भीतर को एंट्री करिबा प्रोसेस को कहती इम्प्लांटेशंस। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? ना the attachment of blastocyst to uterine wall is called implantations. Implantation is the process by which the attachment of blastocyst to uterine wall is called implantations. Next, the fifth step is gestations. After blastocyst formed, then the blastocyst developed to form embryo. The embryo development process is called gestation. embryonic development प्रोसेस को गेस्टेशन कहते। ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होइका एम्ब्रियोनिक स्टेज रे कन्वर्ट हुए, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस को कहते गेस्टेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड गेस्टेशंस। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप रे आसिला पैचुरेशंस। Parturitions means the delivery of the baby is called parturitions. After 9 months by 10 months, the baby is fully developed and the delivery of the baby is called, से प्रोसेस को आमे कहबा पैचुरेशन। बेबी रो डेलीवरी प्रोसेस को कहबा पैचुरेशंस। द डेलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पैचुरेशंस। बेबी रो डेलीवरी प्रोसेस को कहती पैचुरेशन। सेवेंथ स्टेप रे रहिला लैक्टेशंस। What is lactations? Now it is the process of milk secretion from the mammary gland of a female after childbirth. It is the process of milk secretion from the mammary gland
mammary glands of a female after childbirth. This is all about the lactations. Lactation is the process by which milk secretion from mammary gland. Female रो mammary gland रू milk secretions हुए ना जेते बेले गोटे फीमेल चाइल्ड को जन्म कर सारा परे बात कर सारा परे तार mammary gland रू milk secretion हवा प्रोसेस को कहते lactation. The lactation is the process milk secretion from the mammary gland of a female after childbirth is called lactation. It is all about the process of human reproductions. Process of human reproduction: gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation, parturition and lactations. After the process of human reproductions, next जानी मैम जे पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स केते प्रकार पार्ट्स दुई प्रकार गोटे होची मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फर्स्ट देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पार्ट मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट रे अच्छी को पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रे अच्छी. फर्स्ट देखिबा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. That is the male reproductive part ro दुई प्रकार two types. That is the first sex organ secondary sex organ. मेल रिप्रोडक्टिव रो दीटा पार्ट अच्छी गोटे अच्छी फास्ट सेक्स ऑर्गन गोटे होची सेकेंड सेक्स ऑर्गन. The first sex organ is called a necessary sex organ. Necessary sex organ. Secondary sex organ होची accessory sex organ. Accessory sex organ. The first sex organ होची necessary sex organ. सेकेंडरी ऑर्गन होची accessory sex organ. फर्स्ट देखिबा व्हाट इज नेसेसरी सेक्स ऑर्गन. तो नेसेसरी सेक्स ऑर्गन होची नेसेसरी सेक्स ऑर्गन आउटा होची accessory सेक्स ऑर्गन. नेसेसरी सेक्स ऑर्गन रे फर्स्ट रहिबो टेस्टिस. नेसेसरी सेक्स ऑर्गन रो फर्स्ट रहिबो टेस्टिस. accessory सेक्स ऑर्गन रो दीटा पार्ट रहिबो गोटे होची डक्ट सिस्टम आउटे होची ग्लैंड. नेसेसरी सेक्स ऑर्गन रो वन पार्ट द फर्स्ट सेक्स ऑर्गन जोटा टेस्टिस एंड द accessory सेक्स ऑर्गन रो दीटा रहिबो गोटे डक्ट सिस्टम गोटे ग्लैंड सिस्टम. डक्ट सिस्टम रे डक्ट रहिबो 4 टाइप्स. दैट इज भास इफरेंशिया तापरे भास डिफरेंशिया तापरे एपिडिडाइमिस तापरे मेल पेनिस. ग्लैंड रहिबो
Three types, that is seminal vesicles, prostate gland, next ରହିବ କ୍ୟାଉପରସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ବଲ୍ବ ୟୁରେଥ୍ରାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, क्लौपरसिस gland or otherwise called bulbourethral gland. This is all about the male reproductive systems. First sex organ is called testis, and testis is called necessary sex organ. First sex organ by necessary sex organ. Second ରହିବ accessory sex organ, two types, that is duct system and gland systems. Duct system ରେ ରହିବ ଭାଷା ଇଫରେନ୍ସିଆ, vas deferens, epididymis, male penis. Gland ରହିବ seminal vesicles, prostate gland, Cowper's gland. Cowper's gland is otherwise called bulbourethral gland. This is all about the male reproductive systems.